Hey guys, welcome back to my new another video. In this video, I will draw a portrait of विराट कोहली. बट मैं जो पहले ड्रॉ करता था वो A4 साइज या A4 साइज से बड़ा होता था. सो गाइज मैं इस वीडियो में काफी स्मॉल पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाला हूँ क्योंकि गाइज कार्ट आर्टिस्ट आर्ट चैनल को आप जानते होंगे, तो उन्होंने एक आर्ट कंपटीशन रखा है. तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप लोग भी उस आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो क्योंकि आप लोग को काफी कुछ सीखने को मिलेगा. सो गाइज उन्होंने कुछ रूल एंड रेगुलेशन के साथ कुछ ड्रॉ करने, आर्टवर्क ड्रॉ करने बोला है, जो कि काफी स्मॉल साइज में एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है विराट कोहली का. उन्होंने रेफरेंस फोटो भी दे दिया है वो रेफरेंस फोटो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप लोग इजीली डाउनलोड करके ड्रॉ कर सकते हो. सो गाइज उन्होंने जो साइज बताया है वो एक साइड है 11 सेंटीमीटर और एक साइड 9 सेंटीमीटर. तो मैं काफी सारा चीज मैं अपने स्क्रीन पे बता दूंगा आप लोगों को कैसे आउटलाइन को ड्रॉ करना है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फाइनली गाइज मैं अपने सीट पे आ चुका हूं. तो सबसे पहले मैं ग्रिड को ड्रॉ कर लेता हूं, फिर आप लोग को बताऊंगा कि कितना कितना ग्रिड आप लोग को ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले तो एक जो रूल है उसको फॉलो करना है कि 9 सेंटीमीटर और एक साइड 11 सेंटीमीटर का लाइन हम लोग को ड्रॉ कर लेना है, वो पहले आप लोग ड्रॉ कर लेना. सो गाइज मैं देख सकते हो जो ग्रिड है मैंने ड्रॉ कर लिया. तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप लोग को अच्छी से समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे कैसे ड्रॉ किया हूं. तो देख सकते हो जो रेफरेंस फोटो है, रेफरेंस फोटो के ऊपर ग्रिड ड्रॉ हुआ है. तो ये वाला भी रेफरेंस फोटो सेम टू सेम आप लोग को मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना. तो देख सकते हो इधर 9 सेंटीमीटर का मैंने ड्रॉ किया, 9 बॉक्सेज है और एक बॉक्सेज है 1 सेंटीमीटर का. तो इसी तरह करके 11 सेंटीमीटर है, 11 बॉक्स है और 1 बॉक्स है 1 सेंटीमीटर का. तो इसी तरह करके आप लोग पूरा ड्रॉ कर लेना. तो देख सकते हो मैं सबसे पहले आई किस बॉक्स में इसे गिन लेता हूँ, 4 2 3 4 यहाँ पे है. तो इधर भी मैं गिन लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ 4 1 2 3 4. यहाँ पे जो है हमारा जो आई ड्रॉ होगा तो मैं यहाँ पे हल्का सा मार्क कर लिया. अब क्या करना है गाइज, जो एक बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो सेम टू सेम हमारे जो मोबाइल है उसको भी 1 सेंटीमीटर का मेजर करना होगा. उससे आप लोग को ऑब्जर्व करने में बहुत ही ईजी होगा. सो गाइज मैं अब इसे सीट के जस्ट साइड में रखूंगा और इससे और भी अच्छे से ऑब्जर्व करके मैं ड्रॉ कर पाऊंगा. तो देख सकते हो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा. और आज तक मैं कभी इतना छोटा आउटलाइन ड्रॉ नहीं किया हूं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है. 1 सेंटीमीटर के बॉक्स में आप लोग को ड्रॉ करना है. तो आप लोग को एक चीज़ रहना जरूरी है यार, मैकेनिकल पेंसिल का यूज करना, क्योंकि इसका जो लीड होता है काफ़ी ज़्यादा पतला होता है. अगर आप चाहो तो पेंसिल का भी यूज कर सकते हो, बट उसे अच्छे से शार्प कर लेना, तब जाके आप इसे ड्रॉ करना. तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और काफ़ी मज़ा आ रहा. ऐसा फर्स्ट टाइम है तो कुछ अलग अलग करने में काफ़ी मज़ा आता है. तो इसी तरह करके आप लोग ड्रॉ करो. और ये कंपटीशन कार्ट आर्टिस्ट के द्वारा रखा गया है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यार इससे, क्योंकि इतना छोटा आप लोग कभी ड्रॉ नहीं किए होगे. और करो, काफ़ी अच्छा है और आप लोग भी पार्टिसिपेट करो. तो देख सकते हो मैं इसी तरह करके ड्रॉ कर रहा हूँ, अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ. 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स है उसमें ड्रॉ कर रहा हूँ. तो बट इसमें भी काफ़ी ऑब्जर्वेशन लग रहा, क्योंकि जो बॉक्स है 1 सेंटीमीटर का और उस पर आई ड्रॉ करना है, किस पोजीशन पे आई है उस चीज़ का ध्यान में रख के हमें ड्रॉ करना होता है. तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी टाइम दे के मैं ड्रॉ किया हूँ. और जहाँ पे ज़्यादा मतलब गलती हो जाता तो मैं पूरा अच्छे से इरेज कर देता था, क्योंकि जब भी मैं सेटिस्फाई नहीं होता था तो फिर मैं इरेज कर देता था, क्योंकि अच्छे से ड्रॉ करना है. और इसका जो फाइनल रिजल्ट है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा. और इसका शेडिंग ट्यूटोरियल भी जल्दी लेके आऊँगा, तो उसके लिए भी टेंशन मत लो, शेडिंग कैसे करना है इतने छोटे फेस में. तो ये सब भी मैं अच्छे से बता दूंगा आप लोगों को. तो जैसे सबसे पहले तो मैं ये आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे साथ ही पूरा आउटलाइन ड्रॉ करो. और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना. तो देख सकते हो. और गाइज मैं अभी बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर देता हूँ, आप लोग बोर फील नहीं करोगे. तो इस वीडियो को तो पूरा लास्ट तक जरूर देखना, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करना. और गाइज जो भी नए व्यूअर्स यार फर्स्ट टाइम हो मेरे चैनल पे, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटे से यूट्यूब फैमिली के मेंबर जरूर बन जाना. तो गाइज मिलता हूँ यार आप लोगों से शेडिंग वाली ट्यूटोरियल में. अभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के इसे ड्रॉ करो. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found for you and I. And so
the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us, in front of us. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down, embrace the love we found. For you and I are safe and sound. Can we just slow down? And we can slow waste another day. I don't know how to play. You say we need a change, I feel that you need it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, it's not like we need them. Safe and sound. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah,